गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, सो वेलकम टू द प्रीलिम्स बूस्टर सेशन। आज का पहला टॉपिक है न्यू हिट एंड रन लॉ। टॉपिक आपके गवर्नेंस के लिए इंपॉर्टेंट है। गवर्नमेंट ने ट्रांसपोर्ट बॉडी जो है AIMTC उनको अश्योर किया है कि जो न्यू लॉज हैं, जो क्रिमिनल लॉ और जो IPC का रिप्लेसमेंट है, उनको अभी इम्प्लीमेंट नहीं किया गया है और उनको जो है कंसल्टेशन करने के बाद ही जो है वो इम्प्लीमेंट किया जाएगा। तो ये बिल्स कौन से हैं या कौन से लॉज हैं जिस पर जो है कंट्रोवर्सी हुई है? भारतीय न्याय संहिता, जो उसको पार्लियामेंट के अप्रूवल के बाद प्रेसिडेंशियल असेंट भी मिल चुका है, वो IPC जो है 163 ईयर ओल्ड पुराना, उसको रिप्लेस कर रहा है। उसके अंदर ही ये न्यू हिट एंड रन केसेस से रिलेटेड एक लॉ है। तो ये भारतीय न्याय संहिता जो है, इसमें कहा गया है कि ड्राइवर्स जो कि सीरियस रोड एक्सीडेंट कर देते हैं नेग्लिजेंट ड्राइविंग करते हुए और वहाँ से भाग जाते हैं बिना किसी अथॉरिटी को बताए हुए, उनको अब 10 साल तक की जेल हो सकती है या फाइन हो सकता है 7 लाख तक का। ठीक है। तो बेसिकली ये पिछले जो पुरानी आपका IPC है, उसमें तो अटेम्प्ट टू मर्डर के हिसाब से चार्जेस लगते हैं सेक्शन 304 में, और 2 साल तक की जेल हो जाती है ना। इससे ये एक बिल्कुल डिपार्चर है, मतलब डेडिकेटेड लॉ ले आया गया है न्यू हिट एंड रन केसेस से रिलेटेड। अब ये लाया क्यों गया था? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट थी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि स्ट्रिक्ट लॉ लेकर आओ, इसको डिफरेंट ट्रीट करो, अटेम्प्ट टू मर्डर मत ट्रीट करो। तो अब इसके अंदर भी ना सेक्शन 106(1) और सेक्शन 106(2) दो प्रोविजंस हैं। पहला तो वो प्रोविज़न है जिसमें अगर आप जो ड्राइवर है वो एक्सीडेंट होने की वजह से, चाहे नेग्लिजेंट ड्राइविंग की हो, लेकिन एक्सीडेंट अगर हुआ, वो उतर कर अगर उसकी हेल्प कर रहा है या उसने अथॉरिटीज़ को इन्फॉर्म कर दिया, तो उसको मैक्सिमम 5 साल तक की जेल हो सकती है। उसके अंदर भी बेल उसको मिल सकती है। उसके ऊपर कल्पेबल होमिसाइड के चार्जेस लगेंगे कि मतलब जानबूझकर नहीं मारा, बस जो है एक्सीडेंट हो गया है। तो उस केस में उसको बेल भी मिल सकती है, सज़ा भी कम हो सकती है, 5 साल तक की मैक्सिमम हो सकती है। लेकिन अगर वो भाग जाता है तब तो उसको जो है ऑफ कोर्स ऐसे ही ट्रीट किया जाएगा। ठीक है। तो अब जो है, लेकिन जो ट्रक बस और टैंक का ड्राइवर्स हैं वो कह रहे हैं कि इससे जो है ड्राइवर जो हैं अनजस्ट पनिशमेंट से जो है वो डिस्करेज होकर ड्राइविंग के प्रोफेशन में नहीं आएंगे। ड्राइवर्स जो है वो मॉब वायलेंस हो सकती है उनके साथ, कि अगर वो रुकते हैं किसी भी पर्सन को एक्सीडेंट को में उसको हेल्प करने के लिए, तो जनता उन्हें मारना शुरू कर देगी वहाँ पर, है ना। तो इसीलिए ऑफ कोर्स वो कह रहे हैं कि मॉब वायलेंस जो है उनके साथ हो सकती है। जबकि मॉब लिंचिंग के अगेंस्ट तो डेथ पेनल्टी तक के प्रोविजंस हैं इसमें, इस न्यू लॉ में। ठीक है। तो जनता जो है ऑफ कोर्स मारने से पहले डरेगी। लेकिन जो है, ये भी कहा जा रहा है कि कंसल्टेशन भी ठीक से नहीं की गई स्टेक होल्डर्स से पहले, ये लॉ लाने लाने से पहले। ठीक है। सो नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं, फ्री मूवमेंट रिजीम विद म्यांमार। इंटरनेशनल रिलेशंस के लिए टॉपिक इंपॉर्टेंट है। तो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स के मुताबिक यूनियन गवर्नमेंट जो है वो फ्री मूवमेंट रिजीम जो है म्यांमार बॉर्डर के जो पास में, उसको स्क्रैप करने वाली है। तो एक एडवांस्ड स्मार्ट फेंसिंग सिस्टम जो है इंडिया और म्यांमार के एंटायर बॉर्डर पर जो है लाया जाएगा। तो इंडिया और म्यांमार का बॉर्डर जो है वो 1643 किलोमीटर लंबा है। अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम के साथ ये बॉर्डर लगता है। सिर्फ दो अनडिमार्केटेड पोर्शंस रह गए हैं इंडिया और म्यांमार के बॉर्डर पर। एक तो अरुणाचल प्रदेश के लोहित सब सेक्टर वाले एरिया में, एक मणिपुर के कबाओ वैली के पास में। ठीक है। तो हुआ क्या है कि इस जगह पर सिक्योरिटी कंसर्न्स हैं, क्योंकि ग्रेटर नागालैंड की मूवमेंट चल रही है। फिर नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स के जितने भी इंसर्जेंट ग्रुप्स हैं, वो इंडिया में जो है अटैक करके वो भाग जाते हैं म्यांमार में, क्योंकि वहाँ से पोरस बॉर्डर है, तो उनको सेफ हेवन मिल जाता है। और नारकोटिक स्मगलिंग भी होती है, क्योंकि यहाँ पर गोल्डन ट्रायंगल स्थित है। नदर्न आइलैंड, नदर्न थाईलैंड, लाओस और म्यांमार का जो रीजन है, इसको हम गोल्डन ट्रायंगल ऑफ ड्रग कहते हैं। यहाँ से जो है ड्रग ट्रैफिकिंग होती है सिंथेटिक ड्रग्स की म्यांमार से। तो ये एक बहुत बड़ा कंसर्न है हमारे लिए। तो बॉर्डर मैनेजमेंट सही से करने की ज़रूरत है। मॉडर्न वेपन्स और इक्विपमेंट लगाए जाने चाहिए। अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स का यूज़ किया जा रहा है। और असम राइफल्स जो हैं वो यहाँ पर डिप्लॉयड हैं इन्फिल्ट्रेशन की प्रॉब्लम को चेक करने के लिए। स्मगलिंग और इलीगल एक्टिविटीज़ को रोकने के लिए जो है गवर्नमेंट को फेंस करना है इस एरिया को। और इंडिया म्यांमार बॉर्डर को जो है, बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर को भी इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट जो है वो मेजर एंट्री पॉइंट्स पर, हमारे लैंड बॉर्डर्स पर लगाए जाने की ज़रूरत है। बॉर्डर एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम जो एक कॉम्प्रिहेंसिव अप्रोच है बॉर्डर मैनेजमेंट की,
वो भी ऑफ कोर्स अडॉप्ट करनी ज़रूरी है। तो फ्री मूवमेंट रिजीम है क्या? इसमें होता क्या है कि जो सिटीजन्स हैं दोनों साइड के, म्यांमार और इंडिया के, ये जो उस 16 किलोमीटर का एरिया है जो बॉर्डर का, उसके आसपास दोनों साइड जा सकते हैं, ठीक है, बिना किसी वीज़ा के। इसको 2018 से इम्प्लीमेंट किया गया था, गवर्नमेंट एक्ट ईस्ट पॉलिसी के अंदर इसको लेकर आई थी। एक्चुअली जो बाउंड्री है इंडिया और म्यांमार की, ये आर्टिफिशियली डिमार्केट की गई थी ब्रिटिश द्वारा 1826 में। तो कुछ ऐसी ट्राइब्स थी जो डिवाइड होकर कुछ म्यांमार में चली गई, कुछ इंडिया में रह गई। तो आपस में वो एथनिकली सिमिलर हैं, तो उनको जो है आपस में मिलने के लिए ये फ्री मूवमेंट रजीम जो है चलाई गई थी बिना वीज़ा के नीड के। लेकिन कोविड के टाइम से ये बंद पड़ी है, और उसके बाद जो है 2022 में रिफ्यूजी क्राइसिस होने शुरू हुआ जब म्यांमार से, तो इंडिया ने इसको तब सस्पेंड कर दिया। अब जो है इंडियन साइड पर अटैक करके म्यांमार भाग जाने वाले जो इंसर्जेंट ग्रुप्स हैं, उनको रोकने के लिए ये किया जा रहा है, फ्री मूवमेंट रजीम को बंद किया जा रहा है। और इससे इलीगल इमिग्रेंट्स जो आ रहे थे, या ड्रग्स या गोल्ड की स्मगलिंग हो रही थी, उसको भी जो है एक रोकने की कोशिश की जा रही है, ठीक है। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं, रूल्स फॉर CAA। ये टॉपिक आपके गवर्नेंस के लिए इम्पॉर्टेंट है। तो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स के हिसाब से जो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019 के रूल्स हैं, वो बहुत जल्दी जो है वो नोटिफाई किए जाएंगे। तो ये सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट क्या है? ये इलीगल इमिग्रेंट्स की जो डेफिनेशन है उसको चेंज कर रहा है, खासकर हिंदू, सिख, पारसी, बुद्धिस्ट, जैन्स और क्रिश्चियंस इमिग्रेंट्स जो कि पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान और बांग्लादेश में थे, लेकिन इंडिया में आ गए हैं बिना डॉक्यूमेंटेशन के। उनको फास्ट ट्रैक मोड पर इंडियन सिटीजनशिप 5 साल के अंदर जो है वो देने का प्रोविज़न है इसमें। इसके अंदर OCI कार्ड्स को भी कैंसिल करने का प्रोविज़न है, जहां पर सिटीजनशिप एक्ट के प्रोविजंस अगर वायलेट किए गए हैं उस पर्सन द्वारा, तो उसका OCI कार्ड कैंसिल कर दिया जाएगा। अब कौन एलिजिबल है इसके लिए? जो भी रिलीजियस परसिक्यूशन हुआ है जिनका आसपास की कंट्रीज़ में, और कट ऑफ डेट रखी गई है सिटीजनशिप की 31 दिसंबर 2014। मतलब जो यहाँ इस पर्टिकुलर टाइम तक जो भी ऐसे लोग इंडिया में आए और उनके ऑफ कोर्स रिलीजियस परसिक्यूशन का उनके पास जो है रीज़न था उस कंट्री को छोड़ने का, तो अगर वो 5 साल तक इंडिया में रहेंगे तो उनको जो है सिटीजनशिप मिल जाएगी, ठीक है। तो ये उन एरियाज़ में एप्लीकेबल नहीं है जहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन का 6 शेड्यूल एरियाज़ हैं, और ऐसे एरियाज़ जहाँ पर इनर लाइन परमिट रजीम चलता है, जैसे अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड और मिज़ोरम, ठीक है। तो इतना डिले क्यों किया गया है इसके इम्प्लीमेंटेशन के लिए? क्योंकि असम और त्रिपुरा में बहुत ज़्यादा इसका जो है वो अपोजिशन हो रहा था, और असम में प्रोटेस्ट चल रहे थे कि ये जो लॉ है ये 1985 के असम अकॉर्ड्स के अगेंस्ट है, वॉलेशन में है। और इसको ये भी कहा जा रहा था लॉ को कि ये एंटी मुस्लिम लॉ है। तो बाकी के कंट्री में भी जो है कुछ ग्रुप्स इसको अपोज कर रहे थे। तो काउंटर क्लेम क्या रखे गवर्नमेंट ने कहा कि हम रिलीजन के बेस पर नहीं, रिलीजियस डिस्क्रिमिनेशन के बेस पर ये लॉ लेकर आए हैं। ये लेजिस्लेशन कोई ऐसा नहीं है कि पूरी दुनिया में कोई भी प्रताड़ित है तो उसको हम अपने पास रख लेंगे, ओमनिबस सोल्यूशन नहीं है ये। तो जो रूल्स हैं वो तैयार कर लिए गए हैं, पोर्टल बना दी गई है, जो इसके बेनिफिशरीज होंगे वो ऑनलाइन ही अप्लाई कर सकेंगे अपने मोबाइल फ़ोन से। पूरा प्रोसेस ऑनलाइन होगा और उनको सिटीजनशिप जो है वो मिल जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं, वर्ल्ड्स लार्जेस्ट रेडियो टेलीस्कोप। ये टॉपिक साइंस एंड टेक के लिए इंपॉर्टेंट है। तो साइंटिस्ट जो इंडिया के हैं वो इंटरनेशनल मेगा साइंस प्रोजेक्ट स्क्वायर किलोमीटर अरे ऑब्जर्वेटरी का पार्ट बनने वाले हैं, और जो कि वर्ल्ड का लार्जेस्ट रेडियो टेलीस्कोप होगा। इंडिया का जॉइंट मीटरवेव रेडियो टेलीस्कोप जो है वो अमंग द वर्ल्ड्स 6 लार्ज टेलीस्कोप्स होगा, ठीक है। सो ऑफ कोर्स रेडियो टेलीस्कोप्स क्या होते हैं? तो रेडियो टेलीस्कोप्स जो है डिटेक्ट करते हैं, एम्पलीफाई करते हैं रेडियो वेव्स को स्पेस में से। तो जितनी भी एस्ट्रोनॉमी है वो लाइट को ऑब्जर्व करने के ऊपर बेस्ड है। स्टार्स, गैलेक्सीज, गैस क्लाउड्स, ये विजिबल लाइट तो एमिट करते ही हैं, बल्कि रेडियो वेव्स, गामा रेज, एक्स रेज, इंफ्रारेड रेडिएशन, ये सब भी एमिट करते हैं। रेडियो टेलीस्कोप्स जो है वो बोथ नाइट और डे दोनों टाइम पर इसको यूज़ किया जा सकता है। तो जाइंट मीटर वेव रेडियो टेलीस्कोप अगर हम देखें तो पुणे के पास लोकेटेड है। लो फ्रीक्वेंसी रेडियो टेलीस्कोप है जो कि इन्वेस्टिगेट करता है वेरियस रेडियो एस्ट्रोफिजिकल प्रॉब्लम्स को।
नेशनल सेंटर ऑफ रेडियो एस्ट्रोफिज़िक्स जो है द्वारा ये ऑपरेटेड है, और ऑपरेशनल हुआ ये साल 2000 में। ठीक है। एस्ट्रोनॉमर्स ऑल ओवर द वर्ल्ड जो है वो रेगुलरली इस टेलीस्कोप को यूज़ करते हैं एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट्स को ऑब्जर्व करने के लिए। और ये तीसरा है इंडिया में जिसको इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर द्वारा माइलस्टोन फैसिलिटी द्वारा रिकॉग्नाइज किया गया है साल 2021 में। तो नेशनल सेंटर फॉर रेडियो एस्ट्रोफिजिक्स क्या है? एक रिसर्च इंस्टीट्यूशन है इंडिया में जो कि रेडियो एस्ट्रोनॉमी के फील्ड में काम करता है। पुणे यूनिवर्सिटी के कैंपस में इसके जो है लोकेटेड है। ऑफ कोर्स प्रोफेसर गोविंद स्वरूप की लीडरशिप में इसको 1960s में बनाया गया था। अब स्क्वायर किलोमीटर अरे ऑब्जर्वेटरी क्या है? ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका यहाँ पर बनाई जा रही है। यूके, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका, कनाडा, चाइना, फ्रांस, इंडिया, इटली, जर्मनी ये मिलकर जो है इसको बना रहे हैं। और जो है कंस्ट्रक्शन फेज़ जो है दिसंबर 2022 में बिगन हुई थी साउथ अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया में। और इंडिया जो है इसमें मेनली न्यूरल नेटवर्क जो सॉफ्टवेयर है वो कंट्रीब्यूट करेगा। सेंट्रल गवर्नमेंट ने 1250 करोड़ रुपए का जो है फाइनेंशियल सैंक्शन भी इसके लिए अप्रूव कर दिया है। तो ग्रेविटेशनल ऑब्जर्व वेव्स को भी ऑब्जर्व किया जाएगा यहाँ से। अब ये ग्रेविटेशनल वेव्स क्या हैं? रिपल्स जो हैं स्पेस टाइम में, जो कि बहुत ही वायलेंट और एनर्जेटिक प्रोसेस होती हैं यूनिवर्स का, वो ग्रेविटेशनल वेव्स होती हैं। और ये अपने साथ वो इन्फॉर्मेशन भी लेकर आती हैं कि ये कहाँ से आ रही हैं, ठीक है, इनका ओरिजिन कहाँ से है, और नेचर ऑफ ग्रेविटी को भी जो है ये क्लू देती हैं। तो इसलिए इनको ऑब्जर्व करना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो लीगो ऑब्जर्वेटरी है, आपको पता है, जो कि ग्रेविटेशनल वेव्स को ऑब्जर्व कर रही है। वर्ल्ड की लार्जेस्ट ग्रेविटेशनल वेव ऑब्जर्वेटरी यूएस में ही हैनफोर्ड में, वाशिंगटन में, और लिविंगस्टन में, लुइसियाना में, ये 2 जगह पर ये लीगो ऑब्जर्वेटरी सभी लोकेटेड है। एक इंडिया में भी बनाई जा रही है ना। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं कार्बन लाइन। ये टॉपिक आपके साइंस एंड टेक के लिए इंपॉर्टेंट है। तो कार्बन लाइन की कोई स्पेसिफिक नेशनल डिमार्केशन नहीं है, जो कि इंटरनेशनल वाटर्स की तरह जो है कोई ऐसा कंसेप्ट नहीं है जिससे कार्बन लाइन को हम डिफाइन कर सकें। कार्बन लाइन बेसिकली वैसे क्या है? अबव सी लेवल से 100 किलोमीटर का जो ऑल्टीट्यूड होता है उससे उससे ऊपर वो बेसिकली कार्बन लाइन है। ये हमारे अर्थ के एटमॉस्फेयर को स्पेस से डिमार्केट करती है। 1960s में इसको बनाया गया था FAI द्वारा, और सारे साइंटिस्ट और सी फेयरर्स स्पेस फेयरर्स इसको नहीं मानते हैं अभी। रफली ये वो ऑल्टीट्यूड है जिसके ऊपर जो है कोई भी एयरक्राफ्ट फ्लाई नहीं कर सकता। अगर कोई भी पर्सन इस ऑल्टीट्यूड को जो है वो क्रॉस कर जाता है तो उसको टेक्निकली हम एस्ट्रोनॉट समझते हैं। ठीक है। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं यूएन स्टैटिस्टिकल कमीशन। टॉपिक आपके इंटरनेशनल रिलेशंस के लिए इंपॉर्टेंट है। तो इंडिया अपनी 4 ईयर की साइकिल शुरू कर चुका है यूनाइटेड नेशन स्टैटिस्टिकल कमीशन का मेंबर की तरह। यूएन स्टैटिस्टिकल कमीशन 1947 में बनाया गया था। हाईएस्ट बॉडी है ये ग्लोबल स्टैटिस्टिकल सिस्टम की। ये चीफ स्टैटिशियंस फ्रॉम मेंबर स्टेट्स जो है अराउंड द वर्ल्ड उनको इकट्ठा करता है, और हाईएस्ट जो है स्टैटिस्टिकल स्टैंडर्ड्स, ग्लोबल स्टैंडर्ड्स जो है वो सेट करता है। 24 मेंबर कंट्रीज इकोसॉक द्वारा ये जो है हर साल जो है इलेक्ट की जाती हैं, सिलेक्ट की जाती हैं। और अगर हम देखें 4 साल के लिए ऑफ कोर्स ये सिलेक्ट की जाती है। इंडिया लास्ट टाइम इसका जो मेंबर है वो साल 2004 में बना था, और अब दोबारा बना है। ओके। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं डायरेक्ट टू मोबाइल टेक्नोलॉजी। ये टॉपिक आपके साइंस एंड टेक के लिए ही इंपॉर्टेंट है। तो इंडियन टेलीकॉम ऑपरेटर्स ने गवर्नमेंट को बोला है कि जल्दी से जल्दी जो है स्पेक्ट्रम ऑक्शन होना चाहिए डायरेक्ट टू मोबाइल टेक्नोलॉजी सर्विसेज के लिए। तो डायरेक्ट टू मोबाइल टेक्नोलॉजी क्या है? जैसे आपका एफएम रेडियो चलता है मोबाइल पर या किसी भी डिवाइस पर बिना किसी इंटरनेट या बिना किसी जो है टेलीकॉम सर्विस के, वैसे ही डायरेक्ट टू मोबाइल टेक्नोलॉजी होगी जिसमें ब्रॉडबैंड और ब्रॉडकास्ट दोनों को इकट्ठे करके इस्तेमाल किया जाएगा। तो बेसिकली आप मोबाइल पर बिना इंटरनेट के जो है मल्टीमीडिया कंटेंट जैसे टीवी मैचेस देखना, ये सब जो है स्ट्रीम कर पाओगे। तो डायरेक्ट टू मोबाइल टेक्नोलॉजी जो है बिना डिपेंडेंस ऑन इंटरनेट की चलेगी, और इंटरनेट डेटा कंजम्पशन की जो है के ऊपर जो हमारी अभी करंटली रिलायंस रहती है वो कम हो जाएगी। ठीक है। तो ये अभी लेकिन ये डेवलपमेंट स्टेज पर ही है, और इसको
वाइड स्केल पर लॉन्च करना एक बहुत बड़ा चैलेंज रहेगा. सो नाउ लेट अस सी ऑल दीज टॉपिक्स इन इंग्लिश. So the first topic is new hit and run law. This topic is important for your governance section. Government has assured the members of transport body AIMTC, All India Motor Transport Congress, that the new laws which have replaced IPC and CRPC have not been implemented yet, and they will only be implemented after consultation with the transport body. So what is Bharatiya Nyaya Sanhita? So this is basically the law which has received presidential assent, and it will replace the 163-year-old IPC. So there is a new law on hit and run cases with respect to this particular uh, subject of controversy. So Bharatiya Nyaya Sanhita has replaced IPC, and under this Bharatiya Nyaya Sanhita, Section 106, Clause 1 and Clause 2 talk about road accidents, drivers causing road accidents seriously with negligent driving and fleeing without informing authorities. They would now face imprisonment of up to 10 years or a fine of 7 lakh rupees. So this is a significant increase from the previous punishment of 2 years. So actually what was happening is that under IPC there was no such provision for hit and run cases, but they were tried in attempt to murder clause only. Okay, and now there is dedicated law regarding the same, because the Supreme Court wanted a strict law dedicatedly for this hit and run cases. So under section 106 of clause 1 and 106 clause 2, these provisions have been accommodated by the government. And under the first provision, if a driver gets someone killed in an accident, even through negligent driving, but stops and helps the person, informs the authorities that through my mistake I have made this accident, then it would be considered as a culpable homicide. It would not be treated as if that driver had an intent to kill the person. But only this provision of 10 years would only be applicable if you kill someone in an accident and flee from the spot. So then it would be considered that you had the intent to kill that person. That's why you have fled from the spot. Okay, so this is a difference between the law, and people, especially these truck drivers, they were unable to comprehend the law. They believed the rumors, and that's why they were protesting against it. So they were alleging that the punishments are unjust. So uh, this would discourage this law would discourage drivers to adopt this profession, and these drivers may also be subject to mob violence. They were saying that if they stop to help someone in an accident, mob lynching could take place. But they did not know that there is a separate law for mob lynching also, in which there is also provision of death penalty. Okay, so they were also alleging that the consultation was not held with them before framing this law. Okay, so these were certain criticisms. So the next topic is free movement regime with Myanmar. This topic is important for your international relations. So as per government officials, Union government is set to scrap the free movement regime with Myanmar. So an advanced smart fencing system for entire India-Myanmar border will be made. So if we look at the India-Myanmar border, it runs for about 1643 kilometers, and the states of Arunachal Pradesh, Nagaland, Manipur, and Mizoram share the border with Myanmar. So out of this total border, demarcation of 1472 kilometers has been completed, but there are two undemarcated portions also: Lohit subsector of Arunachal Pradesh and Kabau Valley of Manipur. So what are the security concerns along this border? So movement of for Greater Nagaland comprises in both India and Myanmar has destabilized this border. Several insurgent groups who are operating in northeastern states of India, they have ties to groups with Myanmar also. So their porous border helps them to get safe havens in the other side of the border. There is also narcotic smuggling, because India is located near the golden triangle of drug production. Northern Thailand, Laos, and Myanmar. These are the golden triangle of drug production countries, and trafficking of synthetic drugs happen to and from Myanmar. Okay,
So there is a need for border management. So Assam rifles is deployed in this region. Modern weapons and equipment like unmanned aerial vehicle, battlefield surveillance radar, and laser rangefinder are being used for border security. Border fencing is also done to check the problem of infiltration, smuggling of contrabands, and illegal activities. There is also a project to improve border infrastructure along the India-Myanmar border. Government is also setting up integrated checkposts at major entry points in on our land borders, and there is also border area development program, which is a comprehensive approach to border management being taken up by Home Ministry. So, what is this free movement regime? So, under this regime, people or tribes along the India Myanmar border can travel up to 16 kilometers inside that other country without the need of a visa. So it was implemented in 2018 as part of our Act East policy. So actually, what has happened is that India Myanmar border has been demarcated by the British in 1826 very randomly. So it has basically divided the ethnically similar communities along the two countries uh, uh, very haphazardly. So there was a need to enable ethnically similar communities living across the borders to move freely without the need of a visa, so as to provide impetus to local trade and business. So, but this provision had several shortcomings. So this agreement has been defunct since 2020 during the COVID times. But even in 2021, when military coup happened, India suspended this free movement regime with Myanmar in September 2022 due to refugee influx. So why we are suspending or terminating this free movement regime with Myanmar? Because insurgent groups have been using this facility, to attack Indian side, and then they flee to the Myanmar. Okay, there is also an influx of illegal immigrants, drugs, and gold smuggling is being facilitated through this corridor. Okay. So the next topic is rules for CAA. This topic is important for your governance section. So according to government sources, rules for the CAA will be notified uh, much before Lok Sabha elections. So what is Citizenship Amendment Act of 2019? The act seeks to amend the definition of illegal immigrant for Hindu, Sikh, Parsi, Buddhists, Jains, and Christians, but not Muslims, of course. Immigrants from Pakistan, Afghanistan, and Bangladesh who have lived in India without documentation. So they will be granted fast track Indian citizenship in 5 years. Um, and this law also includes cancellation of OCI registration where the OCI card holders have violated any provision of the Citizenship Act or any other law enforced. So, who is eligible for the benefits? So, anyone who has been forced or compelled to seek shelter in India due to persecution on religious grounds, they are given the benefit. So, the cutoff date for citizenship is 31st December 2014, which means that anyone who has migrated to India before this time period and the person has faced religious persecution in these countries, they are eligible for citizenship. So this law will not apply to areas of sixth schedule, and they will not this law will also not apply to areas which have an inner line permit regime like Arunachal Pradesh, Nagaland, and Mizoram. So why the so much delay in the implementation of CAA when the law was passed in 2019? Because there was vociferous opposition in several states including Assam and Tripura, and this protesters in Assam were alleging that this law would permanently alter the demographics of the state, and it would be in violation of the 1985 Assam Accord. Also, this law was considered as anti-Muslim because it leaves out persecuted Rohingya Muslims from of Myanmar, Tibetan Buddhists from China, and Tamils from Sri Lanka. So there are counterclaims in response to the petitions against CAA. The government has said that the reasonable classification made by the 2019 Act was not religion but religious discrimination in neighboring countries. Okay, because they have a state religion, we do not have any state religion. Okay, so this legislation was not meant to be an omnibus solution for any religious discrimination and around the world. Okay, we cannot, of course, adopt all the refugees who have been religiously persecuted everywhere. So
This entire process would be made online. The rules would, when once the rules would be notified, and the applicants can apply even from their mobile phones and get the benefit of citizenship. So the next topic is world's largest radio telescope. This topic is important for your science and tech section. So scientists in India will now also be part of the international mega science project called the Square Kilometer Array Observatory, which will function as the world's largest radio telescope. India's GMRT, Giant Meter Wave Radio Telescope, is among the world's six largest telescopes. So what is a radio telescope? Radio telescopes detect and amplify radio waves from space. All astronomy is based on observing waves of light. Stars, galaxies, and gas clouds in space emit visible light, and electromagnetic spectrum in the form of radio waves, gamma rays, X rays, and infrared radiation. So, radio telescopes can be used in both night and day. So, what is Giant Meter Wave Radio Telescope? It is located in Pune. It is a low frequency radio telescope which helps investigate various radio astrophysical problems, and it is being operated by National Center of Radio Astrophysics. It became operational in the year 2000. So astronomers from all over the world have been regularly using this telescope to observe many different astronomical objects, and it is the third telescope in India which has been recognized with the IEEE milestone facility. So, what is National Center for Radio Astrophysics? It is a research institution in the field of radio astronomy. It is located in Pune, of course, Pune University campus, and it was established in 1960s under the leadership of Professor Govind Swarup. So, what is this Square Kilometer Array Observatory? So, this is an international radio telescope project which is being built in Australia and South Africa, and some of the other countries apart from India which who are participating in this project include UK, Australia, South Africa, Canada, China, France, Italy, and Germany. The objective is to build and operate cutting edge radio telescopes to transform our understanding of the universe, and the construction began in December 2022 in both South Africa and Australia. India is developing the neural network software which is required for this telescope manager, and the central government has has also sanctioned an amount of 1250 crore rupees for the same. So it would also be observing the gravitational waves, which are basically the ripples in space time caused by some of the most violent and energetic processes in the universe. And these cosmic ripples, or the gravitational waves, they travel at speed of light, and they carry with them the information about their origins as well as the clues to the nature of gravity itself. So, what is Interferometer Gravitational Wave Observatory, or the LIGO project? It is the world's largest gravitational wave observatory. Currently, two widely separated interferometers have been constructed in United States, Hanford and Livingston. And you know that in India also, LIGO India project is being made. So the next topic is Karman line. This topic is important for your science and tech section. So Karman line, which lacks a specific national demarcation, uh, is a concept of international space, but has a it does not have a similar resemblance as that of international waters. So what is Karman line? It is located 100 kilometers above sea level, and it's an imaginary line which demarcates the Earth's atmosphere from space. It was established in 1960s by a record-keeping body called the FAI. It was named after Theodor von Karman, and not all scientists and spacefarers currently accept it. It roughly marks the altitude beyond which no traditional aircraft can fly. So anyone who crosses this line basically qualifies as an astronaut. So the next topic is UN Statistical Commission. This topic is important for your international relations. So recently India has started its 4-year term as a member of United Nations Statistical Commission, which was established in 1947 as the highest body of global statistical system. It brings together the chief statisticians from member states around the world, and it is responsible for setting statistical standards at the global level. Okay, so 24 member countries of the UN are elected every 4 years by the UN ECOSOC, and India is also a member. India was last time the member of UN Statistical Commission in 2004. Okay,
So the next topic is direct to mobile technology. This topic is important for your science and tech section. So Indian telecom operators have asked the government to auction the spectrum which will be used for direct to mobile technology services. So direct to mobile technology is similar to that of an FM radio. It would be a combination of broadband and broadcast. So basically you would be able to stream live TV matches and multimedia content without the use of internet. So it would be very reliable, and it would not be dependent on internet or cellular networks. It would basically reduce our reliance on internet data consumption. Um, so currently it is in very development stage, and it launching it on a wide scale would be a very big challenge. Okay, so these were our topics for today. We'll meet next time with new topics. Until then, goodbye and take care.